Good morning, student. Today we will discuss communication media or communication channel. Already we know communication is an exchange of information, data, and resources between two or more parties through a channel or medium. So, out of the five basic components, communication media is one of the component. Communication media means the channel. Communication media it is the channels through which a message is propagated from sender to receiver. Suppose this is the sender and this is the receiver. We want to send a message here, hello, that will be transferred to other device through a channel. So hello is the message. This is the message, and this message need to be transferred from sender to receiver. हमको सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस को मैसेज भेजना है. कैसे भेजेंगे? थ्रू दिस चैनल और पाथ और वायर और केबल. And this cable is the medium through which message is propagated on sender to receiver. So this is why the communication media or the channel medium इसका प्लूरल होता है मीडिया. Communication media or the channel through which message are propagated from sender to receiver. We classified all the channels into two groups: guided media, or we can say wired media. Second, unguided media, we can say wireless media. Unguided media or wireless media. So first, guided media or wired media. When there is a physical dedicated line, there is a dedicated line between the sender and receiver used to transmit the message from sender to receiver. जहाँ पर एक तो फिजिकल कनेक्शन होता है, एक वायर और केबल होता है, इसके बीच सेंडर और रिसीवर के फिजिकली बोथ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर. That type of media is called as guided media. Guided media. So यहाँ पर क्या होता है? The sender device has a physical connectivity at the one end of the wire or cable. The second end is connected to receiver side. That's why guided media is also called as wired media. यहाँ पर वायर फिजिकल वायर यूज होता है जिसके जरिए हम सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करते हैं. अभी हम लोग देख रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया आते हैं. वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल. ऐसे बहुत टू लाइन cables is also there. So there are several types of guided media are used. First we will discuss twisted pair cable. Twisted pair cable. ट्विस्टेड पेयर केबल मतलब जहां पर दोनों वायर, टू इंसुलेटेड वायर्स आर ट्विस्टेड विद ईच अदर. Twisted with each other in a particular fashion or pattern is called as
twisted pair cable. It was invented by Alexander Graham Bell, and both the wire is made of copper. Both the wires are made of copper and insulated with a plastic. Plastic से insulated रहता है. And these wires are twisted each other in a fixed pattern. एक तो fixed pattern में twisted होते रहता है. उसलिए उसका नाम क्या दिया गया? Twisted cable बोलते हैं. And each cable is twisted with other cable as a whole, so that it reduces the interference or noise in the transmission of data. जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वहां पर इंटरफेरेंस या नॉइज कम होता है, रिड्यूस करता है. उसलिए उसका नाम क्या दिया गया? ट्विस्टेड केबल. वायर इज ट्विस्टेड to reduce the noise or any impurities found during communication. And this is two types. One is shielded twisted pair cable, other is unshielded twisted pair cable. Shielded twisted pair cable, other is unshielded twisted pair cable. इसके डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होता है 5 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन स्पीड होता है. 5 मेगाहर्ट्ज टू 100 मेगाहर्ट्ज डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होता है. जनरली इट इज यूज्ड इन कनेक्टिंग बल्ब्स, फैंस. इसके लिए हम इसको यूज करते हैं. कौन सा? ट्विस्टेड पेयर केबल. सो ट्विस्टेड पेयर केबल इज ए गाइडेड मीडियम. It is a guided medium where two insulated copper wires are twisted with each other in a fixed pattern. And since they are twisted, they reduce the interference and noise during transmission. It is used for transmission speed up to 100 megahertz. And it is two types. One is shielded twisted pair cable, other is unshielded twisted pair cable. There are two types of twisted pair cables. Second one, coaxial cable. Coaxial. कोएक्सियल का मतलब होता है कॉमन एक्सियल केबल्स. यहाँ पर क्या होता है? एक्चुअली देयर आर टू केबल्स आर देयर. This is the conductor. This is the dielectric insulator. And this is the metallic seal. And this is the cover, plastic cover, made of plastic, or jacket, you can say jacket. So here two conductors are used. That is a single axis. Here in coaxial cable, the inner conductor is made of copper. And surrounded by woven braided metal sheet working as a outer conductor. ये इसके अंदर जो इनसाइड कंडक्टर होता है, ये ब्रैकेट्स तार वायर में क्या होता है? बना होता है, उसको कवर करता है. ये इनर कंडक्टर जैसा काम करता है, ये बाहर का आउटर कंडक्टर काम करता है. एंड बोथ हैव द सेम
same axis, common by the axis. And the central conductor is electrically insulated from the outer conductor from insulating material. दोनों both conductors are insulating with each other. And generally these are used for Ethernet internet connections and also general TV connection, television connections. And here the outer one has a jacket that covers all the both the wires in a jacket, so that there is no any interference from outside. So this is called as jacket. And coaxial cable consists of two conductors. One is inner conductor, which is made of copper. The outer conductor is a braided insulating wire that is insulated from inner conductor, and both have a common axis. And the whole is covered with a plastic jacket. So it is used for generally television connections and Ethernet connection. What's the internet connection will be used in that. Baseband connection and broadband connection. Next one, fiber optic cable. Fiber optic cable is mostly used for internet connections, and this fiber optic cable क्या होता है इसमें? It works as a principle of light, and fiber optic cable is a cable guided media that is used for high speed internet connections. It is flexible and it has high speed of data transmission rate. इसका data transmission rate बहुत fast होता है as compared to twisted pair cable and coaxial cable. Twisted pair cable and coaxial cable used for short distance transmission, and fiber optic cable used for long distance high speed data transmission. And fiber optic cable is more costlier than twisted pair cable. It is three part. One is core part, second one is cladding, and third one is buffer coating. इसका तीन पार्ट होता है. ये हो गया core part, ये हो गया आपका क्लैडिंग, ये हो गया बफर कोटिंग. So generally we know total internal reflection, TIR. Here it works as a principle of total internal reflection. When light passes from one medium to another medium, in suppose it is made of glass, so when it passes from one medium to another medium, the light does not get reflected, it gets back reflection to the same medium. तो यहाँ पर field इधर आएगा. In this way, the light travels in a straight line, and by using total internal reflections, the data is transmitted in the form of beats. Beat by beat data transmission होता है. So in the core part is made of plastic or glass. Then the cladding is surrounded by this part, and the last part is total part is covered by buffer coating. Buffer coating is there. To cover all this. And it is used for long distance data transmission that uses electromagnetic waves or light waves. Light waves usually data transmission करता है by the principle of total internal reflections. Here, this is the principle of total internal reflection. So when light is travels from denser to rarer medium. This is the normal. So generally it reflected back again and transmit the light. This will reflected and transmit the after certain when it reaches the critical angle,
the light is reflected as parallel to the axis. So any light which is transmitted, greater than the angle, greater than critical angle, is refracted back to the same medium. So refraction, instead of in case of reflection takes place. That is called as total angular reflections. And fiber optic cable uses the principle of total angular reflections. As light always passes through the straight line, so that here by using total angular reflection, light passes straight line and parallel the reflections. So there are different types of guided media. Now we will discuss what are the different types of unguided media. Unguided media. Unguided media are the wireless media. That does not have any physical dedicated line between the sender and receiver. यहाँ पर आपको physical connection sender and receiver की जरूरत नहीं होता है. All the data is transmitted through electromagnetic waves or radio waves. So here data transmission takes place between the sender and receiver without direct connection, without dedicated line. There the sender, microwaves, wireless connection, radio waves, satellite connection, infrared, Bluetooth. We have several types of wireless connections. So first we will discuss for microwave connections. Microwave is a wireless transmission board that has frequency range of 0.3 GHz to 300 GHz. जिस वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज 0.3 से लेके 300 GHz तक होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव. Microwaves travels in straight line and cannot penetrate a solid object. Suppose ये दीवार से उस दीवार को ट्रांसमिट नहीं हो सकता because it always obstructs the solid device. So that long distance transmission using microwaves require high tower. इसलिए टावर लगाया जाता है. इस टावर लगाने से क्या होता है? जो भी ये सॉलिड ऑब्जेक्ट बीच में आते हैं, सपोज ऐसा सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है that transmission just straight line में होता है. So that if you put your tower in a highest peak point, the transmission is very easy. And two microwave tower depends upon the factory building frequency and height of the tower. और height ज़्यादा है, transmission speed ज़्यादा है, क्योंकि उसके बीच free space आ जाएगा. There is no obstacle can oppose the data transmission. The transmission speed ज़्यादा हो जाता है. And मैंने both tower which both the tower do not have any physical obstacle between them, then data transmission is very faster and easy. It ranges the frequency between 0.3 to 300 GHz, and it is used as a less expensive than wide medium, and it has less installation cost. Installation cost कम होता है. Next हमारा होता है radio waves. Radio waves has a frequency range of 3 kHz to 3 GHz. 3 kHz to kilohertz to 3 kHz to 3 GHz. 3 GHz, and it is used for communication over distances ranging between
few meters, and radio waves can generate signal that can be transmitted between long distance devices that has the frequency range between 3 gigahertz to 3 kilohertz to 3 gigahertz, and it is used for indoor connections as well as for outdoor connections. And your cordless phone, your AM PM ब्रॉडकास्ट जो रेडियो हम सुनते हैं वो सब इसके थ्रू से ट्रांसमिट होता है, रेडियो सिग्नल के थ्रू से ट्रांसमिट होता है। उसलिए हमको एक चैनल लगाना पड़ता है और चैनल की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होने से हमको सिग्नल ट्रांसमिशन सुनाई देता है। सो दिस इज कॉल्ड एज रेडियो वेव्स। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, radio waves transfers data in all directions uniformly. That is the main advantage of your radio waves. Next one is satellite connections. Already you know satellite is a heavenly body. Satellite connection is a heavenly body that revolves in the orbit of the earth. And satellite connections are used for long distance data transmission. जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग होता है या किसी में लाइव टेलीकास्ट होता है, वो सब क्या यूज करते हैं? सैटेलाइट कनेक्शन यूज करते हैं। सैटेलाइट कनेक्शन में क्या होता है? माने ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट, सैटेलाइट इज कॉल्ड एज uploading, and satellite to earth signal transmission is called as downloading. तो अभी हमको इसका रेंज कितना होता है? 1.5 GHz to 20 GHz, माने it is used for high frequency transmission. यहाँ पर रेडियो वेव से कितना होता था? 3 किलोहर्ट्ज to 3 GHz। इसका होता है 3 किलोहर्ट्ज to 1.5 GHz to 20 GHz. So here most important fact, the objects and the satellite must be in a line of sight. Line of sight मतलब जैसे हम सूरज को देखते हैं, जहाँ से भी देखते हैं लगता है कि हमारे से वो स्ट्रेट लाइन में है, हमारे आँख से स्ट्रेट लाइन में। उसलिए the satellite and objects that receive the signal from the satellite must be in a line of sight. line of sight. उसलिए देखना आप जब टीवी का सेटिंग करते हो तो डिश टीवी जो डिश होता है वो डिश को जो ऑपरेटर आता है एडजस्ट करता है, एंड इट मस्ट बी इन ए लाइन ऑफ साइट। दोनों लाइन ऑफ साइट में से सिग्नल को रिसीव करता है। सो दिस इज द यूज ऑफ सैटेलाइट फॉर वायरलेस कनेक्शंस। वेरियस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फॉर द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ एंड सैटेलाइट itself, it is called as geostationary satellite, geostationary satellite, medium earth satellite, low earth orbit satellite. So next is infrared. Infrared has a high frequency range from 300 gigahertz to 4 lakhs gigahertz. 4 lakhs gigahertz. And infrared is used uses the frequency just below the frequency of the red color. So it is called as infrared. Infrared because its frequency is just below the red color. That's why it is called as infrared wave. And here it is used for short distance communication. आप घर में रिमोट यूज करते हो, रिमोट में एक लाइट ब्लिंकिंग होता है, आपका जो सेटअप बॉक्स होता है। सो ये क्या होता है? दोनों लाइन ऑफ साइट होने से होगा, लाइन ऑफ साइट चल बीच में ऑब्स्टेकल होने से नहीं होता है। और शॉर्ट डिस्टेंस में क्या करता है? ये कम्युनिकेट डाटा ट्रांसमिशन करता है। टीवी हो गया, एसी हो गया, दे आर यूज्ड फॉर व्हाट? शॉर्ट डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन। एंड लाइक योर माइक्रोवेव्स, हियर आल्सो देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्टेकल। जैसे टीवी है, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है और आपका सेटअप बॉक्स, आप रिमोट पकड़े और सेटअप बॉक्स है सामने, टीवी के सेटअप बॉक्स है। अगर बीच में कोई खड़ा हो जाता है आपका टीवी, तो आप चैनल को चेंज नहीं कर पाते, साउंड को चेंज नहीं कर पाते बाय यूजिंग रिमोट। दैट मींस देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्टेकल एंड इट इज यूज्ड फॉर
short distance transmission. So last one is Bluetooth. Bluetooth is also a wireless connection and it is used for transmission of data between two or more devices. जैसे आप मोबाइल से लैपटॉप को ट्रांसफर करते हैं या दो लैपटॉप में डाटा ट्रांसफर करते हैं, लैपटॉप को मोबाइल में ट्रांसफर करते हैं, तो जहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस रेंज में जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लूटूथ. मैक्सिमम द कैपेसिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज 10 मीटर डिस्टेंस. विद इन 10 मीटर डिस्टेंस पर इनका डाटा ट्रांसमिशन होता है एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 2.402 गीगाहर्ट्ज टू 2.408 गीगाहर्ट्ज इसका स्पीड होता है. मतलब विद इन 3 गीगाहर्ट्ज इसका स्पीड लिमिट होता है. And it is used for short distance data transmission. And इसका data transmission maximum होता है 1 Mbps. 1 Mbps. And when you connect more than one, at time में more device का connect कर सकता है. And that network is known as PicoNet. Pico. And by using the name of Herald Bluetooth, it is called named as Bluetooth. Scientist Herald Bluetooth invented the Bluetooth concept. So there are the different types of communication media. First one is guided media that consists of restrictor cable, fiber optic cable, coaxial cable. On-guided media consists of microwaves, radio waves, satellite connections, infrared connections, and Bluetooth connections. So this is your communication media. Thank you. Now we will discuss about network devices. Network devices. So in a network, several types of devices are used. They are called as internet hardware or network hardware. Network devices. Network hardware. So network hardware are the devices that are used to connect same network or homogeneous network or different network, heterogeneous network, and allow exchange of information between them. There are several types of network devices are there. NIC, hop, switch, bridge, router, gateway, repeater, modem, etc. So these are the several network devices. Now we will discuss one by one. So first one is NIC. NIC stands for Network Interface Card. NIC stands for Network Interface Card. Generally, it creates a physical link between the client and a server. जैसे आपका मोबाइल में एक सिम डालने के बाद आप किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर के साथ कनेक्शन कर सकते हैं. ये नेट जो मोबाइल सिम क्या है? NIC. It creates a physical link between a client and a server. That means NIC creates a link or use as an interface between the client and server. And it is a printed chip. It is a printed chip made of silicon material. Most of the NIC
are inbuilt with the motherboard of a computer. Motherboard में लग के भी आता है. अदरवाइज आप एक्सटर्नली भी सिम कार्ड या इथरनेट कार्ड के जरिए आप लैन कार्ड के जरिए यूज कर सकते हो. एंड you know there are several layers to OSI model. There are several layers. One is physical layer, first layer, physical layer, data link layer, network layer, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and this is application layer. So all these layers combined called as OSI layers. These four are called as lower layer, and these three are called as upper layer. So these devices are used in different layer of OSI. So NIC is used in network layer, in data link layer, switch and bridge are used. In physical layer, hop and switch might be used in physical layer. Hop, repeaters are used. In transport layer, router is used. Modem is the physical. So these are the devices which are used in different layer of OSI. They are the supporting layer and they are the actual layer which carries the data from sender to receiver. So NIC is a device that creates a physical link between the client and server. It provides an interface to connect a client with a server. It is a blueprinted or it is a printed chip. Generally red color, blue color दिया होता है तो सिम कार्ड में पीछे तरफ लगा होता है सिलिकॉन मटेरियल. Blueprinted chip made of silicon. It transmits the electrical signal into electrical signal from network layer to transport layer. So इसका काम क्या है? एक डिवाइस को, एक क्लाइंट को किसके साथ कनेक्शन करेगा? सर्वर के साथ कनेक्शन करता है. सो ये सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ रिसीव करता है. सो नेटवर्क इंटरफेस इज नेसेसरी टू कनेक्ट ए डिवाइस इनटू ए नेटवर्क. उसलिए उसका नाम दिया गया है NIC. एग्जांपल आप सिम कार्ड, लैन कार्ड, जो इथरनेट कार्ड होता है, जनरली दिस कार्ड आर आल्सो इंक्लूडेड विद द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर NIC. Second one we will discuss hop. Hop मतलब a point of convergence. किसी भी चीज का एक जगह पे इकट्ठा होने को हम क्या बोलते हैं? हॉप बोलते हैं. हॉप. So hop is a device, network device that is used as a point of convergence. It is a central point of convergence where signal from many directions comes and forwarded to many other directions. It receives a signal from one or more directions and forwarded to one or more other directions. And this is called as hop. A hop works in physical layer, first layer of OSI body. Generally, in hop, the signal which are coming from different directions are transmitted to other directions through different point of connections. These are called as port. Where devices are connected, they are called as port. Each port connect a device, and here it transmits the signal or forward the signal without filtering. यहाँ पर सिग्नल फिल्टर
नहीं होता है। जैसे हम एक बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वहां पर स्विच नहीं लगा तो क्या होता है, सिग्नल डिफरेंट डायरेक्शन से आता है, करंट आता है और डिफरेंट जगह चला जाता है। उसे मतलब लाइट फैन जितना एक साथ ऑन हो जाता है, आपका स्विच नहीं होता, आप फिल्टर कर नहीं पाते, और ऑल द सिग्नल ट्रांसमिटेड टू अदर डायरेक्शंस विदाउट फिल्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन ऑफ सिग्नल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर कोलिजन ऑफ सिग्नल होता है। सो जनरली hop consists of 2 port hop, 4 port hop, 6 port hop, 8 port hop, 12 port hops are there, 16 port hops are there. So hop available in different sizes. As per your requirement you can offer it. And these hops are less expensive than switch and bridge, and we categorize all the hops into 3 parts: active hop, passive hop, and intelligent hop. Active hop, passive hop, and intelligent hop. Active hop मतलब लोहा गरम में मार दो, माने आपका सिग्नल जितना रिसीव करता है उसको एम्पलीफाई करते हैं। It amplifies the signal and then send. आप एक तो स्टेबलाइजर लगा दोगे जैसे तो सिग्नल लो वोल्टेज आने से भी क्या करता है, वोल्टेज को हाई करके भेजता है। ऐसे एक्टिव हॉप क्या करता है, it receives the signal and it amplifies the frequency of the signal then send. उसलिए उसका नाम क्या दिया गया है, एक्टिव हॉप। पैसिव हॉप मतलब whatever, active hop is just like a repeater, and passive hop मतलब whatever it receives the signal is transmitted without amplification. जो भी रिसीव करता है उसी को वो भेज देता है, उसको पैसिव। एंड इंटेलिजेंट हॉप मतलब it is intelligent, मतलब it sends signals as per your requirement, that is it filter the signal then send as per your business requirement, it sends or receives signal. That's why intelligent hop is also called as a switch. A switch is also called as intelligent hop. So now we just conclude hop. Hop is a network device that works in physical era or SI model. Hop is a point of convergence where it receives the signal from one or more directions and forward them to one or more other directions. Hop only receives and sends signal without filter, so that collision of signal is found in hop. And each connection point in the hop is called as port. It is available in different format: 2 port, 4 port, 6 port, 8 port, 12 port, 16 port with different sizes. And it is less expensive than switch and bridge. Hop categorized into 3 types: active hop. Active hop is a hop that amplifies, उसका सिग्नल को एम्पलीट्यूड को फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा और भेजेगा, उसमें उसका नाम क्या है, एक्टिव हॉप, जस्ट लाइक ए रिपीटर. पैसिव हॉप is the normal hop which only receives the signal and send without filter or without amplification. Intelligent hop is the hop that filters the signal and sends the signal as per your business requirement. And the intelligent hop is also called as switch. Now we discuss about switch. Switch. A switch is an intelligent hop. A switch is an intelligent hop. So now we will discuss about switch. A switch is an intelligent hop. इधर हम लोग it filters the signal then send. जो हॉप आपका क्या करता था, जनरल हॉप क्या करता था, सिग्नल को फिल्टर नहीं करता था तो कोलिजन होता था. यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल फिल्टर होता है उसलिए कोलिजन नहीं होता है. That means it avoids the collision. And I told you it works in data link layer of OSI. आपका सेकंड लेयर में काम करता है. It works in physical layer also in data link. Generally data link layer is suitable for switch. So switch
filters the signal and sends to the route which it selects. That means it selects the best route to forward a packet into its towards its destination. जो सिग्नल आता है उसी सिग्नल में से बहुत सारे डायरेक्शन होता है, जैसे हम पढ़े थे डिफरेंट डायरेक्शन, उस सिग्नल जाता है, ठीक है। अगर जिस रूट को हम सिलेक्शन करेंगे उसी रूट से डाटा ट्रांसमिशन होता है. दैट्स व्हाई collision is avoided and it sends and receives signal at the same time. That means it uses the full duplex mode. ये क्या यूज करता है? Full duplex mode. Hop generally uses the simplex mode. It uses the full duplex mode. Full duplex मतलब it can receive and send signal at a time. भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है at a time. And it selects the best route to forward a message towards its destination. And ये different type of technique यूज करता है भेजने के लिए. सर्किट स्विचिंग, जहाँ पर फिजिकल सर्किट होता है, कनेक्शन होता है. पैकेट स्विचिंग, मैसेज को पैकेट एग्रीगेशन करके भेजता है. एंड वन इज अदर साइड से मैसेज स्विचिंग, मैसेज डायरेक्ट मैसेज को भेज देगा जनरल. सो switch uses different type of techniques. One is circuit switching, another is packet switching, another is message switching. And since it filters the signal to avoid the collision, it is called as intelligent hop. And it is costlier than, इसका खर्चा ज़्यादा होता है. It is costlier than hop and hop. It is costlier than hop. So this is all about your switch. So what we know about switch? Switch is a network device that works in data link era of message modem. It is an intelligent hop. It filters the data signal when it receives. It transmits the data signal by selecting a best route and forward the packet into its destination. It selects the best route before transmitting the signal so that collision is avoided. There is no collision of signal, and it is costlier than hop. Generally 12 ports, 24 ports इस हिसाब से स्विच आता है. नेक्स्ट इज ब्रिज. किसी दो एंड को कनेक्शन जो करता है उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं. सो ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस that is used to connect two networks or two homogeneous networks. Suppose this is LAN 1 and this is LAN 2. So a bridge is used to connect the both the networks. It is a device that is used to connect two homogeneous networks using same protocol. Suppose it uses the Ethernet. It also uses the Ethernet. So bridge क्या करता है? Same homogeneous मतलब similar network using similar protocol. दोनों नेटवर्क है, वो दोनों के जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए क्या यूज करता है? ब्रिज यूज करते हैं. And bridge works in data link layer. हाँ तो आप बताइए data link layer और वैसे second layer वैसे. So this is important point. Connect the homogeneous network. Homogeneous networks using same protocol. Protocol is same protocols. And it works in data link layer. कहाँ पे काम करता है? Data link layer पे काम करता है. And a bridge uses the MAC address of the devices. Media access control address. It uses the physical address, MAC address. Media access control address. Physical address. The physical address assigned to this device, and it also filters the signal by maintaining a table called as bridge table. A bridge maintain a table, we call that as bridge table. What is a bridge table? A bridge table is a table that contains
source devices, MAC addresses of the source devices, MAC addresses of the destination devices, cost of transmission. यहाँ पर source MAC addresses, destination MAC addresses and cost within this table. So it helps it to filter the signal while transmitting from one network to another network of same type. जब डाटा को ये फिल्टर करता है तो ये ब्रिज टेबल में मैक एड्रेस को एक्सेस करता है सोर्स डिवाइसेस का और डेस्टिनेशन डिवाइस का और उसी हिसाब से डाटा को फिल्टर करके भेजता है. That's why it filters the signal and it uses a protocol. That protocol is known as STP, spanning tree protocol. Spanning tree protocol. Spanning tree protocol. उसका मतलब टोटल पॉइंट कनेक्शन होता है एजेस को खाली रिमूव करता है. Spanning it contains all the vertices with less number of edges without sagging. So ब्रिज जो प्रोटोकॉल यूज करता है उसको बोलते हैं STP, spanning tree protocol. So bridge is a network device that works in data link layer of voice and modem. It is a device that connects two homogeneous network using same protocol. LAN 1, LAN 2, it uses the Ethernet. That also uses the Ethernet. It maintains a table to keep track of MAC addresses of the source network devices, MAC addresses of destination network devices, and cost of transmission between the source and destination network called as bridge table. It uses MAC address, media or physical address of the devices of the both the network, source and destination, and it uses a protocol called as STP, spanning tree protocol. So these are the various characteristics of bridge. What is the demerits of bridge? It is costlier, and one more thing, a bridge unable to filter broadcast message. It cannot filter broadcast message को और broadcast पैकेट को फिल्टर नहीं कर पाता है. उसका मतलब क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट पैकेट को फिल्टर नहीं कर पाना मतलब क्या है? सपोज एनी पैकेट comes from other network outside the network cannot be filtered because it keeps tagging MAC addresses in bridge table. So any information out of the bridge table cannot be filtered. This is the disadvantage of bridge. Now we have another device called as router or router. Router or router. A router is a device, network device that works in network layer. Sorry, मैं ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ से राउटर होगा नेटवर्क लेयर. It works in network layer of voice and modem. Network layer of voice and modem. And it is a device that connects to heterogeneous network. LAN, I suppose. LAN. One is LAN, another is MAN. Using different protocols. Suppose Ethernet use करता है, ये टोकन रिंग यूज करता है. Two different protocols are used. And to connect two heterogeneous dissimilar network using different protocol, we are using router. So router is a device that connects two different network using different protocol.
जैसे इथरनेट हुआ, टोकन हुआ, ये लैन हुआ, ये मैन हुआ, दोनों को कनेक्शन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राउटर को यूज करते हैं। तो राउटर आपको क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्शन करता है। एंड वन आपका ब्रिज क्या यूज करता था, मैक एड्रेस, इट यूजेस द आईपी एड्रेस और इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, or simply called as internet address. IP address is a unique address of 32 bits. It is assigned to all the devices and network, and this IP address, so 124.16.0.1, this is an example of IP address. So IP address use करता है कौन, router, because when a message is transmitted from data linear, लिंक टू लिंक कन्वर्सन होने के बाद जब किसी दूसरा नेटवर्क में आता है तो वहां पर आईपी एड्रेस की जरूरत होता है, उसके लिए आईपी एड्रेस को यूज करता है। लाइक ब्रिज टेबल, इट मेंटेन्स ए राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल, ब्रिज राउटिंग, ब्रिज टेबल यूज करता है, ये राउटिंग टेबल यूज करता है। राउटिंग टेबल में क्या होता है, सोर्स आईपी एड्रेसेस होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ये नंबर ऑफ होप हो सकता है, नंबर साइज ऑफ द डाटा हो सकता है, कुछ भी उसका कॉस्ट हो सकता है, किसी भी पैरामीटर में ले सकते हैं। कहां से कहां जाना है, समझ 124.16.1.0 to 20.1.5.7, यहाँ पर कोई भी कैन जो भी पढ़ेंगे। So it keeps tracks of all the IP addresses of the source devices, source network and destination network, and cost of data transmission. So IP router has two main functions. One is select the best route or path. It selects the best route or path to transmit a packet towards its destination. पैकेट को उसका डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए सबसे बेस्ट रूट जो है, पाथ जो है, उसको सिलेक्शन करता है। सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, शेयर्स राउटिंग इंफॉर्मेशन विथ अदर राउटर्स, अदर राउटर्स। दूसरा राउटर में क्या करता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। First, it selects the best path to forward a message. Second, it shares the routing information with other router. जैसे हम यहाँ पर कॉल किए, उसका एड्रेस में अगर सपोज उसके पास नहीं है वो एड्रेस, जैसे ब्रिज में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज को वो फिल्टर नहीं कर पाता था, यहाँ पर क्या करता है, नियरेस्ट राउटर के साथ अपना इंफॉर्मेशन को शेयर कर देता है, तो उसके लिए क्या ब्रॉडकास्ट मैसेज को भी फिल्टर कर पाता है। एंड राउटर इज मोर कॉस्टलियर than bridge. And one more thing, it uses two protocol. One is RIP, routing information protocol, routing information protocol. Second one is BGP, border gateway protocol, border gateway protocol. So bridge uses STP, spanning tree protocol. Router uses two protocols, RIP, routing information protocol, BGP, border gateway protocol. And routing information already you know, the source IP address, destination IP address, cost of data transmission, or routing information. And most importantly, router uses two type of routing techniques. One is static routing. Second one is dynamic routing. Static routing and dynamic routing. So first, static routing. When the routing information is manually updated by network administrator. जब किसी भी राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनिपुलेट करता है
ऑपरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग, यहाँ पर राउटिंग इन्फॉर्मेशन फिक्स्ड है। अगर कुछ भी मैनिपुलेशन होता है तो उसको फिजिकली हमको मैन्युअली उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। इसके बाद कौन करता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग is a routing technique where the routing information are updated automatically through a software। जहां पर हम सॉफ्टवेयर यूज करके उसको अपडेट करते हैं, राउटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके अपडेट करते हैं, एल्गोरिथम में अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर राउटर। What are the points? Router is a network device that works in network layer of voice component. It is a device that connects two heterogeneous networks using different protocols. It uses the IP address of source devices and destination devices. It maintains a table to keep track of routing information such as source destination IP addresses, destination network IP addresses, cost of data transmission in a table called as routing table. It uses two protocols, RIP, Routing Information Protocol, another is BGP, Border Gateway Protocol. The main two functions of routers are it selects the best route or path to forward a message or packets to its destination. It shares the routing information with other router. It uses two types of routing techniques. One is static routing, where the information are manually updated, information are fixed, or it is manually updated by network administrator. Dynamic routing is a routing where the routing information are updated through a software package. Software. Then it is called as dynamic routing. Now we will discuss about gateway. So now look at here. The sixth layer is called as presentation layer. The last one is application layer. Gateway is a device that works in presentation layer. Sixth layer of presentation gateway. A gateway is a device that works in sixth layer or presentation layer of presentation. It acts as an, this is important point, it acts as an entrance point. This is multiple choice question. Entrance point to another network. एक नेटवर्क का एंट्री पॉइंट को जहां पर ये अलाउ करता है यूजर को दूसरा नेटवर्क में एंट्री करने के लिए, उसी एंट्रेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? गेटवे। जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज के अंदर जो एंट्री होगा वो एंट्री पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? गेटवे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ए गेटवे इज ए ट्रांसलेटर। इट इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट ए कोड फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, and it can also use to connect two heterogeneous network like a router. दो डिफरेंट नेटवर्क को भी कनेक्शन करता है राउटर जैसा। एंड जनरली इट इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर मीडिएटर। जैसे मैं एक मोबाइल यूज करता हूँ, आप एक फॉर्मेट में मोबाइल यूज करते हो, मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग है। अगर मैं कुछ मैसेज आपको भेजता हूँ तो आपका डिवाइस उसको रीड करता है, तो device that translate that message is called as gateway. And these gateway are categorized into three types. One is address gateway, which translate the one IP address to another IP address. Protocol gateway, it is a gateway that translate the protocol from one protocol to another protocol. And most important, application gateway that works in presentation layer, one application program into another. So this is all about gateway. What is gateway? The gateway is a network device that works in presentation layer. It acts as an entrance point to another network. It is a translator that translates from one application program to another. It connects two heterogeneous network like router. There are three types of gateway. Address gateway that convert one address to another.
protocol gateway that converts one protocol to another, application gateway that convert one application to another. Now we discuss about repeater. A repeater is a device that works in physical layer. कहाँ पे काम करता है? Physical layer of voice. So it is a device that amplifies or regenerates the frequency of a signal. जैसे हमारे अभी जितना साउंड में चिल्ला रहा हूँ, अब पढ़ा रहा हूँ, वो साउंड आपके यहाँ ज़्यादा लगता होगा, लेकिन थोड़ा दूर डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या होता है? सिग्नल डिग्रेड हो जाता है। जैसे यहाँ पर एम्पलीट्यूड हाई है, धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर हम वहाँ पर एक बूस्टर लगा देंगे, एक तो बॉक्स स्पीकर लगा देंगे, क्या होगा? उसका सेगमेंट डिस्टेंस बढ़ जाता है। सो रिपीटर मतलब जो सिग्नल डिग्रेड हो गया है, जिसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घट गया है, उसको बढ़ाने के लिए, रिजेनरेट करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जस्ट लाइक ए बूस्टर repeater. That means its weak signal can be regenerated into original. जो भी था weak signal destination को पहुंचने पर है, यहाँ पर अगर हम repeater को ऐड करेंगे तो जो original frequency था उसको maintain करेगा. That is the what repeater. So as well, a repeater extends the network beyond its limit. जितना network का limit था उसको क्या करता है? Extend कर देता है. उसका area बढ़ा देता है. So it is used for long distance data transmission. Long distance data transmission. This is the main concept of repeater. So what are the points? A repeater is a network device that works in physical layer of voice model. It is a device that is used for long distance data transmission. It is used for regenerating or amplifying the frequency of the weak signal, because a weak signal cannot reach to its destination, so that a repeater is used to amplify the signal to its original form, and it extends the network beyond its limit. Limit का जितना होता है, network का limit जितना था उसका एरिया को बढ़ाता है. These are the various characteristics of repeater. Last part we discuss about modem. What is a modem? A modem is a device that stands for MODM. MO stands for modulator and DEM stands for demodulator. So it is a device that has characteristics of modulator as well as demodulator. So it is a device that has the ability to convert a digital signal into analog signal and analog signal into digital signal. So digital signal to analog signal, analog to digital signal. So it is a device that converts the analog to digital or digital से analog. So shall the digital analog modulator, you have the demodulator. So modem is used generally for converting the analog to digital signal and digital to analog signal. So modulation and demodulation can be done by using modem. So modem is a device that has the features of both modulator as well as demodulator. So modem means modulator, demodulator. It is a device used to convert the analog to digital signal and digital to analog signal. So both the features are available within the single device. जनरली इंटरनेट कनेक्शन में, इंटरनेट डाटा ट्रांसमिशन में ये यूज करते हैं. So today we have covered communications media, wired media, twisted pair cable, coaxial cable, optical fiber cable, and all guided media, your microwaves, radio waves, satellite,
infrared, Bluetooth, and depending on network devices such as NIC, hop, switch, bridge, router, gateway, repeater, and modem. Thank you.